compound interest. And since we have done this chapter before, we are not doing this now, huh? We are doing compound interest. So there are two type of interest, very basic. I'll go. I will not ask you any question on simple interest. Simple interest. Okay, let me go with some terms very quickly. A money that somebody deposits or a money that somebody lends, that is in Hindi known as the Mooldhan, which is known as the principal. P-A-L, not P-L-E. Okay, the money which is in question. I can be a borrower. I am borrowing. That money is known as principal, or I lend the money, that is known as principal. Okay? The time for which we do this borrowing, this transaction or the agreed transaction is known as the time period, usually denoted by N, right? And there is a rate of interest. Interest is that whenever you repay the money or you get your money paid back after your deposit period is over, you will earn some earnings on that. That is known as interest. Profit नहीं उसको earning बोलते हैं. Profit अलग चीज है, ठीक है? उसको हम interest बोलते हैं, ठीक है? Simple interest is a very simple way. It's a percentage based calculation. If the rate of interest is R%, then simple interest means the interest is simple interest. Simple interest means the simple interest is always equal to the rate percent of the principal. Rate percent of the principal into the number of years, as long as the rate is expressed as per annum. Rate percent of principal. Rate percent means what? Rate by 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू द प्रिंसिपल इनटू, तो इसी से आप पीआरटी बाय 100 जो रट्टू मारते हो ना, वहीं से. देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड अमाउंट, also known in banking language as maturity. Say we deposit, I deposit 10 rupees with Anvita and I say I'll going to take it this money after 5 years. After 5 years with 10 rupees I'll get something extra also. That is known as the interest, and the interest and the principal combined together is known as the maturity amount. क्या बोलते हैं उसको? Maturity amount. ये सारा बात होता है जब तक आप compound interest कर रहे हैं, ठीक है? आइए आप compound interest के प्रॉब्लम्स करेंगे, ज्ञान सब हमें पता ही है. अच्छा, what is the difference between simple interest and compound interest? In simple interest, the interest factor remains constant. In compound interest, remember, the amount of the first year becomes the principal of the next year. Means compound interest gives you a better earning. All these examples I have given. Home loan क्या होता है, कार लोन में कैसा रहता है. The whole world works on compound interest only. Compound interest में interest बढ़ता है, तो interest को कैसे बढ़ाओगे? Something you have to change. So the principal changes every year. Whatever amount is at the end of year one, year one's amount becomes principal for the next year. ठीक है? Now, I will talk about it as first as a generic formula, then I'll go by the compound interest formula. The generic formula for this chapter is known as futuristic value. Futuristic value मतलब भविष्य क्या value? FV. Futuristic value, which is given by FV. FV is always equal to present value. Present value, which is known as PV, into 1 plus minus R% by 100 to the power n. This is a generic formula. If you remember this, you will know compound interest also, appreciation, depreciation also. Okay, this is a generic formula of futuristic value. Principal is getting multiplied. Na? Principal into this plus principal into this. That's how the amount comes. Principal plus the interest becomes amount of the next year. So one नहीं, one is a fixed constant. P अंदर multiply होता है, P इसके साथ भी multiply होता है. Futuristic, अभी आप पहले समझो, लिखने से पहले आप अभी मैं जो भी लिखूं आप लिख रहे हो, पहले समझो चीज को. Present value into 1 plus R by 100 plus minus लिखा है मैंने, ठीक है ना? If there is a case of appreciation, and appreciations happen only when rate is positive rate of interest रहता है, then the formula becomes futuristic value will be more. Just like gold, land, आगे जाके हमारा value बढ़ेगा, ठीक है ना? Futuristic value is equal to present value into 1 plus R by 100 to the power n.
और अगर डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन किन सब चीजों में देखा जाता है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ओके, देयर द फ्यूचरिस्टिक वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस r बाय 100 टू द पावर n। एक जमाने में जापान जैसे देश में नेगेटिव इंटरेस्ट था, मतलब इफ यू आर कीपिंग मनी इन अ बैंक, बैंक डिडक्ट्स मनी फ्रॉम यू, वहां पे कैसा हो जाएगा, अप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना, बैंक चार्जेस काट लो। अब ये हो गया कॉमन चीजें। अब एप्रिसिएशन किन सब चीजों में देखा जाता है, गोल्ड है ना, लैंड, और पॉपुलेशन एक ऐसा चीज है जो दोनों में फीचर कर सकता है। हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ते ही रहता है, चाइना में पॉपुलेशन अभी घट गया है, वी आर नाउ मोर पॉपुलेटेड कंट्री। डेप्रिसिएशन आपको दिखा जाएगा प्लांट, प्लांट मतलब प्लांट मींस ऑटोमोबाइल प्लांट, इंडस्ट्री, नॉट द प्लांट इन बायोलॉजी, ओके। प्लांट का मतलब हो गया एनी फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं हम इसको, प्लांट एंड मशीनरी। इट कैन बी एनीथिंग, अ प्रिंटर, आई वांट टू सेल दिस बोर्ड, दिस फॉल्स अंडर, इनको हम फाइनेंस में क्या बोलते हैं, इसको ऑफिस इक्विपमेंट में आ गया, चेयर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ओके। देन ऑटोमोबाइल, ये सब कुछ डेप्रिसिएशन के अंडर में आता है। और यहां मैंने पॉपुलेशन को भी लिख के रखा। आप पूछोगे सर आपने पॉपुलेशन दोनों जगह क्यों रखा, जो लोग सेंसिबल है, नॉलेजेबल कंट्रीज है, वहां पॉपुलेशन इज ऑन अ डिक्लाइन, means the economy of that country will improve. Again, there are some countries where they want population, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में the more you immigrate, the country loves you. Got it? Skill labor नहीं है। चलो ये हो गया। अब इसका ही the same impact of it will be seen in the problems of compound interest. Now, one thing that is different here is that since in simple interest you have a formula for interest, which is PRT by 100. But in compound interest, we don't have a formula for compound interest. We will use this formula only. Futuristic value. भविष्य में मुझे जो मैंने आज बैंक में इतना पैसा डाला, भविष्य में इतना पैसा लेके आऊंगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में भविष्य की वैल्यू को क्या बोलते हैं, अमाउंट। समझ में आया? दिस इज द अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। जब हमारा एफडी बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट इज इक्वल टू principal, this is my present value, into 1 plus r by 100 to the power n। यहां माइनस नहीं होता है बेटा, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा ही, कभी घटता नहीं है। इन नो कंट्री जनरली एज स्टूडेंट्स यू वोंट बी गिवन नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं रहेगा। नेगेटिव रेट मतलब समझ गया, आप बैंक में 100 रुपया रखोगे, बैंक काट के आपको वापस पैसा देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सब पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। सो इफ यू नो दिस फॉर्मूला, this formula becomes more easy for you. Futuristic value, the amount on maturity, is equal to present value, the principal, multiplied by. Hannah madam, tell me, is it correct? Have you understood? No doubt. This problem will only ask you about your calculation skills, because ये n देख रहे हो ना, n जब तक 2 दे दे तो वो आपका दोस्त है, n 3 दे दिया तो आपके साथ थोड़ा सा दुश्मनी करेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में all you are going to face is with n, and I am not a person who will make you रगड़ो पाई on decimals and all, मुझे वो सब पसंद नहीं आता है। However, apart from testing you on this, I will test you on this also. Are you understanding? Cases where population and the other things are there. So shall we take up some problems? तो पहले हम प्रॉब्लम करते हैं कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। एक दो कंपाउंड, मैं अपना बुक तो उस रूम में रख दिया, मैं इसको लेता हूं, देखता हूं। चलो एक दो कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। ये आ गया, लेट्स से वी गो टू एक्सरसाइज 11A एंड प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 11A एंड प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसको क्या करें, इसको छोटा कर लेते हैं। लेट अस मेक दिस स्मॉल। Okay, so exercise 11A, and we are doing question number 1. Okay, simple questions दूंगा एग्जाम में। Now find the amount and the compound interest। तो हमें क्या फाइंड करना है, to find दो चीज फाइंड करनी है। नंबर 1 हमें अमाउंट फाइंड करना है, और अमाउंट में ब्रैकेट में A लिख लीजिए, और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे बहुत लोग CI भी लिखते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI इक्वल टू व्हाट भैया बहुत अच्छा गिवन क्या हुआ है ऑन ₹2500 तो इसका मतलब गिवन क्या है गिवन है प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब P विच इज इक्वल टू ₹2500 फिर बोलोगे सर यूरो 20 अतरे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा अतरे इज लाइक आवर 12th मैन 12th मैन समझो ना okay good man it looks a pair of clubs and he is right now Sigmund the 12th man is going to get it okay time is 2 years time in n is 2 years and we have our rate of interest at 10% per annum so our rate percentage is equal to 10% per annum per annum बोलने का मतलब है बच्चा हर साल साल ये ब्याज लगेगा जो मुनीम जी बैठा रहता है ना ऐसे चश्मा करके भाई एक साल तो क्यों ब्याज के पैसों लगाए मेरे हाथ में करें चलिए हो गया कर दिया आर्यस ने अरे चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए सो वी हैव टू फाइंड आउट पहले हम अमाउंट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है फॉर्मूला होता है अमाउंट का अमाउंट ए क्या होता है बेटा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n पहले a निकाल लीजिए और फिर CI निकालेंगे CI कैसे निकालेंगे a माइनस p वाला फॉर्मूला निकालेंगे चलिए कोशिश कीजिए तो एंड इफ यू वांट माय हेल्प आई विल हेल्प यू इसमें ठीक अभी देखो यहाँ बुक इज बीइंग वेरी वेरी क्यूटी विथ यू 2 इयर्स मतलब स्क्वायर टर्म होगा क्यूब से ज्यादा कोई नहीं देता है या वेट टेल मी no only n no principle is there this p is added here no if n is 1 year you see it like this say n is 1 year then what should be the amount principal plus pr n 1 year means interest is same for the first year it is same as simple interest so prt by 100 t is 1 so p into this plus prt by formula is correct let us first do some compound interest problem then we will do what problem bacha population of a town increases after ghosts appeared in that town यार गजब यार ठीक है करें इस प्रॉब्लम को आइए कितना होगा अमाउंट अन्विता जी प्रिंसिपल 2500 इंटू 1 प्लस व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1 plus 10 by 100 to the power 2 10 by 100 बोले तो 1 by 10 2500 इंटू 10 by 100 मीन्स 1 by 10 1 by 10 और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 1 by वाह यार गजब आंसर्स दे रहे हो आज 1 by 10 to the power 2 इसको और आगे करें तो अत्रे आराम से देख कैसे होता है 10 plus 1 10 by 1 11 अच्छा ऐसे करने में इजी क्या रहता है 2500 लिखिए ऊपर 11 लिखिए एक और 11 नीचे लिखिए 10 इंटू 10 10 पे 2 शून्य कट 11 जा कितना होता है बेटा 121 देखो कितना इजी होता है 121 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 25 1 जा 25 2 कैरी ओवर 25 2 जा 50 50 plus 2 52 5 carry over 25 1 जा 25 25 plus 5 तो हमें 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा भाई 3025 3050 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना a माइनस p P025 माइनस 2500 5 2 5 525 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पैसा तो आपने मालपुए की तरह कपेच लिया समझ में आया that's why I say why aren't we feeling happy the lights are not glowing how can you do that yes Bakul you're looking like a stud handsome yaar Winchester with a smartwatch in my hand Bakul felt like a man oh he's today with smartwatch
लेकिन हाथ में क्या है? हाथ में है हौजर का कलम. That's why today continuously he was shaking his right hand. ऐसे नया घड़ी पहना है ना, जैसे एक आदमी ने नया रेफ्रिजरेटर खरीदा, घर में कोई पूछता है चाबी कहाँ है, वो देखो फ्रिज के ऊपर रखा है, और फ्रिज बताना है ना. अरे मेरे साथ गजब हो गया यार, पता है मुझे ना, माय वाइफ हैड गिफ्टेड मी, यू नो फेस पैक्स आप समझते हो ना, तो एक फेस पैक आता है जिसमें चारकोल बेस्ड फेस पैक भी आता है, तो उस दिन बहुत अच्छा लगा, मैंने चारकोल बेस्ड फेस पैक मुंह पे लगाया, घर पे कोई क्लास वास नहीं है, क्लेंजिंग माय फेस. उसके बाद मैं मेरा लैपटॉप चलाया, मेरा लैपटॉप इस फेस रिकॉग्निशन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डज नॉट रिकॉग्नाइज यू जेडी दास. आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट along with my photo. I was looking like Avatar movie. Avatar आपने देखा है? ब्लू वाला जो आदमी आता है ना, मेरा चेहरा भी बिल्कुल ब्लू था. और उसके बाद है शायद यहाँ पे रहना चाहिए. और उसके बाद कंप्यूटर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया. How dare! I heard that the iris is responsible for all पहचान. So face became like this. And after that, the computer gave me a face like this. Could not recognize you. Oh, that is shown once only. How can I show my clown-like face 2 times to you? ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये वाला हो गया, तो थंबनेल बना लेते हैं ना उसको क्लास के वीडियो में. बच्चा सोचेगा पढ़ाई लिखाई होता है कि क्या होता है. ठीक है, shall we? चलें, can I rub this? Okay, let's take one more problem. एक और प्रॉब्लम करते हैं. So let's take problem number 4. रत्ना नाम की एक लेडी है. बिट्टू प्रॉब्लम नंबर 4 हमको पढ़ के सुनाइए तो. हाँ, प्रॉब्लम नंबर 4 इजी प्रॉब्लम्स करेंगे, इसमें टफ प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे. Try to do your problems from NCERT. रत्ना मैडम, हाँ रत्ना. लोन ऑफ 25. अच्छा, रत्ना ने लोन लिया. अच्छा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. लोन कितने का लिया? 25,000 भारतीय रुपए का लोन लिया. या इसका मतलब है ये बन गया आपका प्रिंसिपल. यहाँ पे लेकिन प्रिंसिपल का स्पेलिंग और स्कूल प्रिंसिपल सेम होगा, प्रधानाचार्य. एंड पीएलई मींस सिद्धांत. हाँ, रत्ना टुक अ लोन. देन If the rate of interest is 8% per annum. अच्छा, इसके बाद हमारा रेट है 8% प्रति सालाना, एनम, यानी कि ये बना हमारा रेट. What amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? डिस्चार्ज हर डेब्ट मतलब समझ रहे हैं, इसका हिंदी क्या है? ऋण मुक्त. उधार लिया ना, तो इस उधार से मुक्ति भी तो लेना होगा. क्या होगा बिट्टू? आंख छोटा हो रहा है, नींद आ रहा है क्या? क्या लगा? तो एक बार आंख चेक भी करा लो. अच्छा, आंख बॉल लगा, तुम लोग यार सब इंजरी हो रहा है. उधर रितिशा इंजर्ड, एक का टांग नहीं टूटा, एक का उंगली टूटा, अब इसका आंख टूट गया है. भाई साहब कल से हेलमेट पहन के आइए क्लास में. अच्छा, डिस्चार्ज फ्रॉम डेट मतलब समझ, डेट मींस उधार, डिस्चार्ज फ्रॉम डेट मींस ऋण मुक्त होना. हाँ, लोन रिपे करने का, नहीं तो गला पकड़ के बोलेगा कहाँ चले, बर्तन बिकवाओ इसके. अमाउंट कितना होगा? अच्छा, आफ्टर कितना बोला? टाइम बोला 2 इयर्स. तो टाइम की वैल्यू हमारी n है, जो कि है 2 इयर्स. बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए इसको. तो कितना अमाउंट देगा रत्ना मैडम? p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n. p की वैल्यू है 25,000, पिछले बार था 2,500, इस बार एक जीरो बढ़िया है भाई साहब, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है. 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस 8 बाई 100, यानी कि ये हो जाएगा इस बार 108 बाई 100 हो जाएगा. देखो तो, टू दी पावर 2. ये ट्रिक समझ में आ रहा है? 1 प्लस 8 बाई 100 बोले तो क्या 108 हो गया. वेट डार्लिंग, अंडरस्टूड? नाउ योर ट्रिक इज टू डू द मैजिक आउट हियर. So you get 25,000 has been multiplied by 108 2 times on the numerator, and you have 100 being multiplied twice. So we take off 3 zeros, still got a 0 left out here. So 108 multiplies with 108, that's 10 और 25 को भी काट सकते हैं. सो अभी मैंने 10 से डिवाइड करने में हमें आसानी होता है. अच्छा, इस 108 को स्क्वायर करने के लिए बेवकूफ की तरह मत कीजिए. 100 प्लस 8 होल स्क्वायर,
अलजेब्रा यूज कीजिए यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8 होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 64 प्लस ट्वाइस ab 2 into 100 is 200 200 into 8 1600 200 into 8 कितना होता है 1600। ये देखो हमने क्या लगा दिया a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, समझ में आया। अरे छोरा छोरी 108 का स्क्वायर कितना बनता है 100 पे 8 जोड़ लेंगे, इसका स्क्वायर नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे घर में माइक्रोवेव ग्लव है पर हम हमेशा पुराने वाले बनियान से ही कढ़ाई उठाते हैं। आपने इतना बड़ा टेक्निक किस लिए सीखा है, उसको तो यूज करो, ठीक है। आइए जोड़ते हैं इसको। 25 multiplied by how much? Or 25 by 10. Don't you forget the 10, darlings. So this is 4, 6, and then another 6, 11, and divided by 10. So multiplying by 25 is the British say, it's quite easy. So 25 multiplied with 4 gives you how much? 100. That's 10 carry over. 25 multiplied by 6, 150. So 10 carry over. 160. So 16 carry over. 25 multiplied by 6, 150, and 16. 150 plus 16, 166. Still 16 carry over. 25 1 is 25, and add 16 with it. That is 35, 41, 1, 4 carry over. 25 ones are 25 plus 4, 29, and that's being divided by 10. So you can happily take away 1 0 from the numerator. Do you understand? You better understand. So the answer would be 29160. And you need to make the face of Ratna also. Ratna is crying very badly. Why? Because she took 25,000 and she is paying back 2910 to discharge. And can we also calculate what was the compound interest charged to Ratna? And that would be 29160. And you take away 25,000 from there. That gives you 0614410. Ratna is paying quite a costly amount. Nevertheless, she has enjoyed the money for 2 years also. We should take care of that too. You get my point? समझ में आया ना? रत्ना मैडम रोने से कोई फायदा नहीं। 2 साल ये पैसा आपको कौन दिया? हम ही तो दिए थे। तो 2 साल पैसे पे ब्याज नहीं दोगे आप, तो देना पड़ेगा पैसे, है ना? రత్న మేడం కి చాలా హ్యాపీ ఉంది. ఎంత రీజన్? రత్న మేడం కి 2 వర్షలో ఈ మనీ ఎంజాయ్ చేసి, రత్న మేడం ఈ మనీ రాలేదు, ఓన్లీ ఎంజాయ్. అండ్ హౌ డిడ్ షీ ఎంజాయ్? లోన్. ரொம்ப సాలిడ్. అండర్స్టాండ్? రత్న మేడం சொல்லமா சின்சியர்லி यार लैंग्वेज है कंटेली. समझ में आया? तो प्रॉब्लम में सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें जीरो मिलेगा तो भैया ये दोनों बार से अपना सर निकाल के फिर दूसरे साइड से चमाटा खाइए, तभी अगर अकल ठिकाने आए आपके, ठीक है। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम करें एक दो, उसके बाद फिर लौट के आएंगे, है ना। आइए कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम भी करते हैं, कुछ तो फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज मेरे आंख का पावर घट गया है। हाँ, आई बिकम जवान। वेयर इज फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम? तो ये है ना बैक्टीरिया इन कल्चर वल्चर, ये सब दो थोड़ा पॉपुलेशन पढ़ो तो एक पॉपुलेशन वाला प्रॉब्लम निकालिए एक तो अच्छा से, बैक्टीरिया पॉपुलेशन। अच्छा, बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रोज, you know that? Acha, how many of you, but till the time he is searching this, let me tell you, we all during rainy seasons and all, you will be suffering from sore throat and other problems. देखो थोड़ा सा medical भी सीखो। So those diseases are all bacterial diseases. Okay. So what is the rule of bacteria? The bacteria will first come and multiply and it will go up. कभी कभी अगर आपको acute bacterial problem हो जाता है ना, then the doctor will advise something which is known as blood का मतलब bacterial infection हो गया है, and they won't treat you directly. Like say
you are having urine infection or you are having throat infection acute और आपको खांसी हो गया है, so the doctor will advise you something called culture, like they will say urine culture or blood culture. You know what is this system? They will take a sample of your blood or urine and they will culture it, allow the bacteria to grow, and they will treat it with different samples of antibiotic, like say penicillin, ciprofloxacin, then amoxicillin, ये सब देके कोई एक के साथ वो बैक्टीरिया मारा जाएगा. Then the doctor will give you the treatment for that. Generally जब भी कोई epidemic वगैरह होता है ना, first 2-3 days the doctor will keep you under symptomatic treatment only. आपका क्योर नहीं हो रहा है, because 72 hours कल्चर में जाता है. कल्चर के बाद पता चलेगा ये इन्फेक्शन किससे घटेगा. Then that is it. उसीलिए कहते हैं बैक्टीरिया कल्चर. तो सीखा करो थोड़ा सा. Yes, why not, darling? You can also read. Today is your day. You are so happy. Tell me. 3 years ago. Wait. I really get tense when I see problems like this. It is something like, oh my God. This is 2024 and the time moves in this side. So that's 3 years ago, means 2021. Okay, tell me. Years ago, the population of the town was 15,000. स्टोरी की तरह पढ़ो ना, मैं कितना सुंदर स्टोरी बना रहा हूँ, तुम उसमें उतना ही ना एकदम बेकार करके पढ़ रहे हो. 3 years ago. Wait, there's a small town. And in this town we have a lot of people. How much is the population? 50,000. 50,000. Go ahead. The annual increase during 3 successive Annual increase during 3 successive years. Mind the word. Annual increase in 3 successive years. Darling, can you tell me which is the question number 3. and the exercise? Okay. If the annual increase in 3 successive years Be at the rate of 5%, 4%, and 3%. this will be a clumsy problem up front, I'm telling you. Different rate of interest. That's compound interest. हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, अलग अलग साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. हाँ, respectively. This sort of problem neither your school will give nor I will give, but since you have told, we will do it. हाँ. What is its present population? What is its present population? So what is its present population? Present means 2024. So we have a year here 2022, 2023. So there इसमें कितना increase हुआ था? 5%. Then what is the increase? 4%. Then what is the increase? 3%. ऐसे questions आपको क्यों नहीं आएंगे बताता हूँ. This is in previous courses it used to be there. When rate of interest differs every year, then instead of using the formula P into 1 plus R by 100, we say P into R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100. ये वो type है. I'm not doing this problem. ये problem नहीं आएगा आपको because you don't have successive rate. Can we read another question? With the single rate of interest. Did you understand? And if you want to break and do it, first you add 5% and you get the new value. On that value again 4%, again on that value. Okay? Let's do a new problem. Try to take problems from the top. नीचे जाओगे तो it is an old course book ना. Let's take another one. Bacteria or problem. Again population of a town. Question number 22. Okay, let me hear the problem first. Go ahead. The population of the town was 1,25,000. Okay. It is increasing at the rate of 2% per annum. Okay. What will be its population after 3 years? Okay, very nice. This problem we can do. So go ahead with the problem. What was the problem? The population Population of a town is 1,25,000. is 1,25,000. Now here you have to be very clear with your grammar. Is 1,25,000 मतलब ये PD Mahesh in a class, can I? No, Arjun is not there. He's left. That class got over by 6:30, 35.
Okay. He must be then with Sarthak or someone, but the class got over. Okay. 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 किसी फादर ने पूछा बेटा घर नहीं आया है, देखो अभी मैं इसमें कितना नींबू निचोड़ सकता होता हूँ. I had told him to go house. He didn't reach. Okay. Is means this data pertains to present day. Okay. Now go ahead with the problem. It is increasing at the rate of 2% per annum. Okay. So the rate of increase means in your mind you should start thinking e problem lo appreciation ఉంది. Appreciation means plus will happen at the rate of how much? 2% Yes, per annum. सालाना 2% करके इस शहर या ये टाउन कस्बा जो भी कह ले इसकी जनसंख्या बढ़ रही है. आगे बोलिए. yes. What will be its population after 3 years? Okay, what will be population after मूर वर्षम 3 years means फिर से आपके मन में बेटा, मन में लड्डू फूटा, आपसे एफबी पूछ रहा है फ्यूचरिस्टिक वैल्यू. अप्रिसिएशन का केस है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू पूछा है, भैया चेप दीजिए फॉर्मूला. चेपेंगे कहा लिखेंगे? फ्यूचरिस्टिक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r by 100 टू द पावर n. समझ में आया? r कहां पे है सर? r यहां पे छुपा हुआ है. n कहां पे है सर? n यहां पे छुपा हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू कहां पे छुपा हुआ है सर? प्रेजेंट वैल्यू यहां पे छुपा हुआ है. तो बस हनुमान की तरह ले लीजिए इस प्रॉब्लम को. क्रेन वाला हनुमान रामायण देखे हो कभी? हाँ हाँ हाँ. रामलीला, रामायण नहीं, रामलीला. रामलीला क्या होता है जानते हो ना? हाँ बताएंगे, अभी प्रॉब्लम कर लो. हाई बजट रामलीला में हनुमान क्रेन में आता है पूरा, ताकि फीलिंग लगे कि हनुमान उड़ उड़ के आ रहा है. क्रेन क्रेन ऐसे. अच्छा, the other day, grade 8, somebody gifted me 2 rupee coin. And I found it in this table at this region. सृष्टि रखी थी उसको फ्लोर पे. अच्छा, सृष्टि रखी थी फ्लोर पे. ये मैं अभी 2 rupees वैसे दिखा रहा हूँ. The fairy showed the woodcutter, is this your axe? Yeah, the golden one is my axe. याद है? The woodcutter and the fairy. All jokes happen here, है ना? You miss something in our life class. There are so many samples out here, different samples. I will one day put a camera on this side. Let us also have a look how it looks from this side. एक सीसी कैम लगा देता हूँ यहाँ पे. फीड डायरेक्टली रहेगा URL टू द पेरेंट्स. वो भी देख सकते हो ना बच्चा कर क्या रहा है क्लास में. क्यों, तुम्हें क्यों टेंशन हो रहा है? तुम्हारा हालत तो वो है, रेड लाइट पे फाइन होगा, सारे ऑटो वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, तुम्हें डर क्यों है? तुम रेड लाइट तोड़ने से फाइन होगा ना. अच्छा, ये था प्रॉब्लम. I am getting nothing, yaar. Everyone should get the same answer. What you are getting, I am getting. Okay, chalo. Let's do this problem. So, futuristic value, FV should be equal to present value is how much? Okka laksham 25 velli. Okay. Into 1 plus R at the 2%. 2% means 102. 2% means 102. 102 by 100 to the power 3. Oh, they are loving you like anything in this problem. I love it. Just simply like it. 3 zeros. 102 cube divided by, you don't know a plus b whole cube ना, grade 8 grade 9 में. सर मैंने पढ़ा था a plus b whole cube आसान है.
a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. कोई भी एक फॉर्मेट में ही आप बात एक ही है. ठीक है, तो आइए जीरोस को काटते हैं मन की खुशी लेके. 3 जीरोस यहां से कट गए और कितना रहा भाई 102 का क्यूब. इफ यू नो एडवांस मैथमेटिक्स कितना हेल्प करता है. लगाए वो वाला फॉर्मूला. चलो लगाते हैं. 125 बाई कितना 1000. 1000 है ना. नीचे नीचे कितना है 1000. आ जाओ. ए क्यूब बोले तो 100 का क्यूब 100 0 0 0 0 प्लस बी क्यूब मतलब 8 प्लस 3a square b. a square b means 10,000. a square is 10,000 into 3 means 30,000 into b 24,000. 30,000 into b. b is how much? 8. 2,40,000. 2,40,000. Did you understand how I got this? 3a square b. See, it should be 100 cube plus 2 cube. फॉर्मूला जानने से आपको हेल्प होता है बच्चा. 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर. और 8 क्यों लिख रहा हूं 1 मिनट है. 3a स्क्वायर b है ना इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर. चलिए, so just look at this. 100 square means 10,000. 10,000 multiplied by 3 is 30,000. 30,000 multiplied by 8. So actually this is 3. This is a cube. This is b cube. This is 3ab square. Now we should do 3a square b. So let's do 3a square b. नहीं गलत हो गया है. 1 minute. 1 minute. It went wrong. Just 1 minute. So a cube. Now we should do b cube. B cube is 8. Then 3a square b. चलो a square is how much? 10,000. 10,000 into 3 is 30,000. 30,000 into 2 is 60,000. So 60, 1, 2, 3. ठीक है 60,000. And then 3ab square. So 3b square is how much? 4. 4 multiplied by 3 is 12. 12 into 100 is 12. चलो इसको ऐड करो. If we add it, this is 8. Then 0 0 0 0 2 2 1 1. Then 6 and then 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is 10 lakh 61,208 and this fellow will be multiplied with this. So let us do that problem now. 125 divided by 1000 multiplied by 106 1208. चले अब 125 से मल्टीप्लाई करना. छोटा कर लेते हैं इसको. 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 and 0 40 and 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40. Have you understood? 25 5 जा 125 and 25 40 5 8 जा 40. 8 से इसको डिवाइड करते हैं. आइए कोशिश करते हैं. 8 1 जा 8 2 26 8 3 जा 24 2 21 8 2 जा 16 5 52 8 6 जा 48 49 50 51 52 4 4 and 0 40 8 5 जा 40 8 1 जा 8. So the population of the town will be becoming 1,03,000 వెళ్ళి 30 వెళ్ళి 32 వెళ్ళి 5 6 651.
नॉट द मैथ्स, द तेलुगु स्किल्स। तुम स्कूल में पढ़ते हो, मैं तो सिर्फ रत्नदीप में बात करता हूँ, उसमें ही हो गया। तो बोलो, ज्ञान किसके पास है? थर्ड लैंग्वेज इज तेलुगु। डू यू रीड? आई कांट। माय सेकंड लैंग्वेज इज फ्रेंच। नहीं होगा ना, कैसे बोलना होगा? एक तोता को बचपन से तोते के चोंच पे टेप मार के रख दोगे और फिर 7 साल बाद खोलोगे, तोता खाली ऐसे पंख हिलाएगा, मुंह से कुछ बोल पाएगा? आवाज ही मर गया उसका, ऐसे चिल्लाएगा। समझ में आया? दूसरे तोते उसके बिरादरी के बोलेंगे पता नहीं कल मुआ कहां से आ गया। तुम्हारी हालत भी वैसी है, तुम बात ही नहीं करते हो। मैं तो कोई भी अमेजोन वाला आता है तो उससे तेलुगु में बात करने की कोशिश करता हूँ, पहले बोल देता हूँ अन्ना सॉरी కొంచెం కొంచెం తెలుగు మాట్లాడదు, और वो भी होता है सर प्रॉब्लम है, बाकी तुम तो एक्सेंट ठीक कर लो जाता है। ये दादा चल बे। Learning language always helps you. I don't think if I would have been in Kremlin, I would have learned Russian by now. I know just 2 words in Russian. Spasiba means thank you. Spasiba. And in French, what they say, mercy. That also you don't know. Dhanyavadam. My second language in French. Can you read that? No, I can't. Only for fashion. आज मैं सुबह वॉकिंग कर रहा था, कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं बस स्टैंड में, कितना ज्ञान दे दे के ले जाते हैं। कोई तो गाड़ी में बिठा के ले जाता है, कितना कुछ यू ना गो लाइक दिस एंड यू शुड से। एक डैड और एक बच्चा पीछे जा रहा है, आज पता नहीं मैं वॉक कर रहा हूँ, बच्चा वो अपनी डॉटर को बोल रहा है लाइक आई ऑलवेज टेल यू व्हाट आई लव यू, और से आई लव यू, व्हाट शुड यू से आई लव यू टू। मुझे कैसा लग रहा है पता है, 3 इडियट जैसा, ऑल इज वेल। बच्चा इसको बोल रहा है आई लव यू, यू शुड से आई लव यू टू। ऐसा बच्चा लेकिन कुछ नहीं सुन रहा है, बैग उसका डैड ने ले लिया है, बच्चा ऐसा करके स्कूल जा रहा है। ठीक है, हो गया। एक और प्रॉब्लम करें, चलिए आइए। Yes, Bogul darling, one more problem, little bit up the order, huh? Yeah. हाँ ये सब चलते रहता है, कितना ज्ञान देता है यार मामा। अरे you give anything यार, today my mind is good and you are still not taking advantage of it. I am bearing you for last 40 minutes, is it more, not more than that? Have I scolded you once today? That means you should go and mark the calendar today. Today was a day I did not get any scolding. You thank that father and the daughter who started their day like that. I was hearing it. Question number 29. Again, why do you go to 29? इस सिलेबस में नहीं, आप बोलो तो एक आरएस, ये पता नहीं कहां से तो राहु काल वाला प्रॉब्लम लेके आता है। आप बोलो एक अच्छा प्रॉब्लम। हाँ, द वैल्यू ऑफ अ मशीन। अच्छा चलो, क्वेश्चन कितना नंबर? 30। अच्छा चलो, हमारे पास एक मशीन है। मशीन है तो बेटा कैसा होना चाहिए? नो मशीन अप्रिशिएट्स, रिमेंबर दैट, नो मशीन। तो मशीन क्या रहेगा? मशीन डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट्स देखते ही आपके मन में ख्याल आना चाहिए बेटा, मन में लड्डू फूटा, 1 माइनस आर बाई 100 का चक्कर होने वाला है इसमें। ठीक है, आगे। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम में एक मशीन की वैल्यू 0 होने में कितना साल लगना चाहिए? 1 साल। 0 हर साल 10% घटता है। नाउ मेनी पीपल विल आंसर सर इट शुड बी 10 years, नॉट एग्जैक्टली 10 years। 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट अगर मशीन का वैल्यू 100 रुपीज है, फर्स्ट ईयर के बाद कितना वैल्यू हो जाएगा? 90। लेकिन नेक्स्ट ईयर के बाद 80 नहीं होगा, 9 रुपीज घटेगा उसमें से 10%, 81। उसका नेक्स्ट ईयर कितना घटेगा? 8 रुपीज 10 पैसा घटेगा। ऐसे करके जाता है। बात समझ में आई? तो किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट सम पीपल इन विन चीटर्स। हाँ, रेट 10%। अच्छा, it was purchased
3 years ago। भाई साहब ऐसा ना, ये ईयर्स बोलने से मुझे बड़ा कब्रिस्तान वाला फीलिंग आता है। मशीन को हमने कब खरीदा था? 2021 में, फिर आया 2022, फिर आया 2023 और अब है 2024। 3 years ago यहां पे परचेज हुआ था मशीन, परचेज यहां पे हुआ था, राइट सर? Present value अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू भी बता दिया है। 2,91,600. 2,91,000 कितना? टेल मी विच ईयर इट इज नाउ। How much? For how much? For how much was it purchased? For how much was it purchased? अच्छा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डेटा पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ बच्चा गलती कर देगा एफवी और पीवी में। ये डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है, यानी चीज की वैल्यू घट रही है। Therefore, the present value will always be less than, sorry, the present value will always be more, the futuristic value will always be less. Have you understood? The year where you buy it is always considered as the present value. Please see, children, this is the present value and this is the futuristic value. Have you understood? Present value जब में खरीदे हो, futuristic value, इससे और फ्यूचर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें ध्यान दीजिए। मशीन वॉज परचेज्ड इन 2021। कितने में हमने मशीन को खरीदा? हमें नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता। कितना साल हो गया है? 3 साल हो गया है। 3 साल के बाद आज वैल्यू कितना है? 2,91,600 रुपीज। और ये मशीन डिप्रिशिएबल एसेट है, यानी कि whatever we calculate our present value, this value has to be more. अगर लेस आ रहा है ना तो समझ लीजिए आपने चमन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है, आगे क्या पूछा है? रेट इज 10% एंड 3 years। तो आपको भाई साहब एन का वैल्यू दे दिया है, रेट 10% दे दिया है, और आपके मन में लड्डू फूट चुका है कि ये ऐसा होना चाहिए बेस्ड ऑन डिप्रिसिएशन। तो आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं छोटा और ले जाते हैं इसको ससुरा साइड में और इसका करते हैं हत्या। ये गया प्रॉब्लम साइड में। ठीक है, बड़े आगे। तो आइए प्रॉब्लम को करते हैं। फ्यूचरिस्टिक वैल्यू इसमें क्या है? सिंस बकुल I'm on laughing therapy. Since Dr. Asthana Abuna bhai, since it is depreciation case, hence we'll write FV is equal to PV into 1 minus R by 100 to the power. Have we understood? Understood? Very good. Very good. What is the FV? 2,91,600. 2,91,600. What is the PV? Sir, I don't know. 1 minus R by 100. What is the rate of interest, beta? 10%. So 100 minus 10. So it will become 90 by 100. And they love you. Therefore 3 years. कौन सा? हाँ, कैंसिल हो जाएगा, कर देंगे भाई साहब। खुश हो गया तेरा मन? और निकाल दो कुछ? अच्छा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब इसको जरा हाथ उल्टा करके लिख लेते हैं। पीवी इंटू 9/10 का क्यूब इज इक्वल टू 2,91,600। भाई साहब समझ में आ रहा है आपको? यानी कि पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2,91,600 और 10 का क्यूब करेंगे तो सर 1,000 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 से 81। तो 9 का क्यूब को भाई साहब ऐसे ही लिख लेते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9। समझ में आया भाई साहब? 6 और 1 7, 7 प्लस 9 इज 16, 16 टू 18। भाई साहब मौत होने वाली है यहाँ पे। 9 3 जा 27, 2 21, 9 2 जा 18, 19 20 21 36, 9 4 जा 36। लड्डू लड्डू
4 plus 2 6 plus 3 9 और जाएगा साहब 9 3s are 27 9 4s are 36 9 3s are 27 28 29 30 31 32 54 9 6s are 54 రెండు 9 4s are 36 రెండు so it is now 4 1 2 3 4 5 3 4 5 the present value of the machine is how much 400,000 that is 4 lakh therefore 3 years ago the machine costed how much rupees 4 laksham 4 lakhs but you should write like this when you do this problem you should say let the present value be the value of the machine 3 years ago बोलो क्या चीज समझ में 9/10 flip कैसा? कौन सा अच्छा ओ मैंने उल्टा किया है बेटा हाँ ठीक तो है ये देखो ये इस साइड में है ना अननोन को जनरली इस साइड लगते हैं ये जैसे ये लड़का है ये मेरी आंख के सामने ही बैठेगा ना हमेशा दूर बैठेगा तो कंट्रोल नहीं रहता इसके ऊपर अननोन को हम इस साइड रखते हैं समझ में आया तो ये क्या हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 10 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10 बोले तो 1000 ऊपर चढ़ गया और 9 इंटू 9 9 नीचे आ गया Where did it become a reciprocal, darling? What nonsense things you are asking, but today I'm in a very smiling mood, you know. So it is PV multiplied by 9 cube divided by 10 cube. Okay, 2,91,600. Darling, in this problem, PV into 9 cube will be retained and 291,600 gets multiplied by 10 cube. Do you understand? And then PV is equal to 291,600 into 10 cube divided by 9 cube. Darling, I can't keep the 9 cube on the same side. I need to get it below, you know. And that's a cutie pie now. Yeah, I get it. Today it's a laughing therapy, you know. I don't get angry. But they're getting built up, huh? So any day they might explode. Yeah. Like the wall of a dam broken and water gushing out and you flown away. Yes, Ananya madam, does that answer your query? yes. No, you cutting 3 times is your mistake, but have you understood my effort or not? Very good. Yes, Bakul, Arish is copying from you. तो ऐसे करके लिख रहा है पूरा हमारे कॉन्वेंट स्कूल में गर्ल्स ऐसे लिखते थे cover your books children and then write Ved, what happened? Life is so dull. You are making your face as if some naughty child has plucked some rose in the garden and there are 3 petals only stuck to the buds and your face is. है ना क्या भाई साहब और मौत को कितने दिन बाकी है मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन बाद होगी आपको क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम्स मैं जो कर रहा हूँ मेरे को पुराने बरगद के चुड़ैल ने काटा है क्या इसी में से ही कुछ एक आ जाएगा अभी ये देख रहा है मार्क करके रखता है आंकड़े बदल सकते हैं लैंग्वेज भी बदल सकता है ना हाँ लगा ले वही वाला आएगा यस आप लोग जरा इसके इनिशियल वो प्रॉब्लम्स देखिए तो सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्व प्रॉब्लम्स जरा देखिए जस्ट सी सम सॉल्व प्रॉब्लम्स whether you are having control or not solve problems initial solve don't see the complex ones नहीं आते बेटा ये चैप्टर से इतने क्वेश्चंस नहीं आते Sir, yes sir so for the exam we only have whatever I have taught you today questions pertaining to the simple compound interest madam and simple appreciation depreciation
And I will not try to make your life hell on calculation. Upfront, I'm saying. If you pull yourself to the hell door, all I can say is it was nice meeting you on this side. Enjoy. Bakul, I'm very much afraid of myself. You know why? In our childhood, in convent schools, we used to have a chapter called a subject called moral science. Moral science, they will teach you about all things about good, about God, evil, this, what you should do, conscience. तो वहाँ पे बुक का नाम ही होता था द रोड टू गॉड एंड देयर यूज्ड टू से व्हाट इज Satan एंड व्हाट इज evil. तो वहाँ पे दिखाता था जो लोग गड़बड़ काम करते हैं ना, उनको ऐसे बड़े बड़े कढ़ाइयों में पकौड़ी की तरह तल रहे हैं, ठीक है, फिर कांटों के ऊपर चलने दे रहा है. बकुल, आई हैव लाइड अ लॉट इन माय लाइफ राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज. Definitely they are going to make drumsticks chicken out of me and fry me in what? Hot oil. I'm afraid only from that point of view from dying. ब्लेड से चलवाएगा मेरे को. हाँ, मैंने इसको कितना डांटा है, और हिसाब करेगा ना तभी आके. यू वर अ टीचर once a while. Yes sir. And there was a student named Bakul. Yes, innocent, a blooming child, and you used to curse him. एक और करें, आप ओके हो? Fine. So take a dip on, you saw the type of problems. We are not going any complex problems. The next class we go back to our direct and inverse variation. Sound, if you all have any doubt, you can ask on your next class, because next class is the first only class before your test. And you can also ask any question on, if there is any doubt, and please don't write summer specifically. Question number 8 and 9 I could not do. मत बोलना बेटा, मेरे पास घर में RS अग्रवाल नहीं रहता, RD शर्मा कोई बुक नहीं है. आप मुझे पिक्चर भेज देना और मैं पिक्चर देख के बोल दूंगा whether this problem is qualifying or not, or my assistant Aryesh is also nowadays qualifying whether this problem will come or not. But anyways, ठीक है. So with a note of happiness, I am concluding this class. बाबा तुम रुक जाओ, इन लोग को सब पूरा निकलने दो फिर जाओ, ठीक है. And see you again in our next class. And should there be any doubt, do not hesitate to bring them up. Bye bye. The recordings will be posted.